तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं एनिमे गेमर्स। मुझे माफ़ करना है, मैं 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए काम आ गया था, फैमिली। तो भावनाओं में ना बहकर गेम बिल की तरफ फोकस करते हैं। It's been getting quite busy recently. गुड हंटर्स, चल मुझे कुछ खाना है यार। ऑर्डर। चल आज मुझे ऑर्डर का करना है। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड 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 आई गेस, बट चल मेरे ऊपर सब जिम्मा छोड़ दी थी। 3, 2, 1, लेट्स गो। मुझे इधर जाना है। ओके कोई नहीं, टेलीपोर्ट। मैं आसानी से जा सकता हूँ। और सॉरी भाई, फिर से बहुत बहुत माफ़ करना मुझे, 3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला, कुछ काम आ गया था। ऑलमोस्ट लोड कंप्लीट हो गया। मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। किसको मुझे ऑर्डर देना या लेना है, किससे तो लेना है। चल उधर चलते हैं। ये कौन से मॉन्स्टर घेरे हुए सबको। ओके, ये कोई आदमी है जो मॉन्स्टर ने जिसे घेर लिया है। इस सबको ख़त्म करते पहले। मॉन्स्टर तेरी किधर बच के जाएगा यार, किधर बच के जाएगा तू। इधर इधर इधर, सामने सामने। चक्री अटैक। अला बच गया बच्चे। कितना देर तक, बस एक खत्म। दूसरा ऑलमोस्ट खत्म। ओ ओ ओ, उड़ के अटैक मेरे ऊपर। ना हिम्मत। अरे तू फायर बॉल फेंक रहा है यार तू। चल, अरे देख ले, 300 का डैमेज देने तेरे को। 100, 150, 200, 300, 50, ये ले और ले। क्या मजा आ रहा है। बोला तो मेरे ऊपर उंगली करने से पहले देख ले, मैं पूरा हाथ डाल दूँ। मेरे से पंगा नहीं भाई। खत्म। और एक बच्चा बचा इनका। ओए बच्चे किधर जाता है। बच्चा खत्म। ऑलमोस्ट सभी डेड। चल इससे बात करते हैं। अरे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, हम परमानेंट हीरो बन चुके अभी। कोई नहीं। ओके, तो इतना दूर मैं आया इसे खाना देने के लिए, बट जैसे पता चला ये खतरे में है, मैं इसे बचाने लगा। एज अ हीरो मुझे करना ये फ़र्ज़ बनता है। तो यस, मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ कि मैं एक हीरो हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज़। चल फिर से टेलीपोर्ट वे पॉइंट। लेट्स गो टू मॉन्स्टेड। अब बोल क्या करना है मुझे सारा। हाउ कैन आई, अरे यार ये मुझसे पूछ रही हाउ कैन आई हेल्प यू। हाँ वापस आ गया। बता 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 बता, अभी क्या। ओके, मेरा फूड डिलीवरी चैलेंज कंप्लीट। दैट्स गुड। नेक्स्ट क्या करना है। Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers हाँ तेरे Guild. पास आ चुका हूँ मैं। मेरा लेवल 18 एंड 19 एडवेंचर रैंक। दैट्स ए गुड थिंग। उतना बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद ये रिवॉर्ड मिलना जायज़ है। मैं 20 नहीं हुआ अभी तक। चल चल Ad नाउ, Astra. अभी कुछ करे इससे। कैरेक्टर्स, माय कैरेक्टर्स, हाँ इसको दिए थे तो क्लेम कर लेते हैं। हाँ कुछ कुछ मिल चुका, वेरी गुड। एक नया खुला है, उसको किसी में डिप्लॉय करे। आजा तू कर। मेरे पास ये कैरेक्टर भी है। न्यू सेलेक्ट कैरेक्टर्स नहीं, अभी बाद में करते हैं। अभी देखते हैं मुझे नेक्स्ट मिशन क्या कंप्लीट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, इससे बात करना है। Here we go. This is it. क्या हुआ रे। Crisis, danger, the thrill of adventure. क्या एडवेंचर है। Adventurers Guild. अच्छा मजा आएगा। Finally, our days of rescuing kittens and finding lost Okay. puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of monsters. वेट अ मिनट। What? मैंने ड्रैगन खत्म कर दिया भाई। ओ The Storm Terror threat is हाँ, resolved. खत्म हो चुका है। I missed the acting Grandmaster's Yep. speech. Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. कोई नहीं कोई नहीं।
ओके चल अब इससे बात करना है। तेरा क्या राय है? Long live the heroes. Thank you. खत्म हो चुका है भाई। हाँ Finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. सच में? I cannot imagine a world without wine. ओह तेरे I को सिर्फ hope दारू they को get पड़ा the हुआ है, trade यहाँ routes दुनिया back खत्म up होने and का आया running था। soon. ओके Haven't नेक्स्ट you heard? नेक्स्ट There's a नेक्स्ट strange नेक्स्ट wanderer near Wolfendom. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. हाँ था 4 मिनट We तो। never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a Really? silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we Okay. have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. ओके तो अभी ये लोग जश्न मनाएगा, आज़ादी मिल गया मुझे आखिरकार। फाइनली वी गेट द फ्रीडम। चल अब इससे बात करते हैं। ऑर्डर लेडी बता 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 तेरे क्या होने वाला? ओके काया आया मेरे पास। May I take your order? Why so cold? ओके ऑर्डर। I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great That's battle right. sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's Sweet talking, sugar-coated Captain Kaya. nonsense. I speak from the heart. Just looking for a क्या quiet कर रहे हो? spot to collect my thoughts. Okay. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of ठीक it, है। I decided to wait. So I waited and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. हम भाग गए एम्बर के डर से। 1 minute I see Kaya, the next he slipped away. हाँ काया को Clear देखा sign बट of a फिर guilty बोलने वाला नहीं। conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. तो एम्बर को एक स्टिकी हनी रोस्ट खाना है। ओके दैट्स अ गुड थिंग। सो नाउ व्हाट टू डू? दे हैव चेक द एरिया। Today's recommendation is the steak. टेक अ सीट बाय एम्बर। ओके एम्बर के साथ बैठने इधर बैठना है। नहीं 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 गलत सीट है, यहाँ पर नहीं बैठना है मुझे, नहीं तो मेरा
मिशन आगे बढ़ता, आगे चलते हैं, उसके साथ बैठते हैं। तो व्हाट्सएप एम्बर। Definitely be something that catches So, your eye. now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. ओके, तो अभी मुझे कैथेड्रल जाना है और जीन से बात करना है। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चल तेरे सबसे बात कर लेते हैं। क्या हो गया रे? स्टॉर्म टेरर तो नहीं रहा ना? अब तेरे को टेंशन किस बात का? स्टॉर्म टेरर का जो भी प्रॉब्लम था वो तो मैंने सॉल्व कर दिया उस ड्रैगन को हरा कर। बट सच में यार, अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाइए उसे वॉच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने जो सबसे मेन बॉस था द ड्रैगन, वही है स्टॉर्म टेरर। डिवाइन नाम है असल में उसका। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ। लेट्स गो टू टॉक। चल चढ़ के जाते लाइक स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन। स्पाइडरमैन चल चल चल। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। लेट्स गो। वेट अ मिनट, इधर तो अभी जीन बहुत दूर है और वो कैथेड्रल वो भी तो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली कैथेड्रल को चर्च बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऑलमोस्ट लाइक अ चर्च जैसा ही दिखता है। ओके लेट्स एंटर कैथेड्रल। एंटर होते हैं और देखते जीन से बात करते हैं, देखते जीन क्या बोलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको बोले कि हाँ कोई एनिमे गेमर है जो कि एनिमे गेम प्रोवाइड करता है। तो बहुत मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है और बहुत अच्छा भी गेम प्ले करता है। आई होप कि मैं अच्छा गेम प्ले करता हूँ, आप लोगों को पसंद आता होगा। लेट्स टॉक टू हर। इससे पिछली बार जब मैंने बात किया था तब मुझे एक ट्रेजर मिला था। ट्रेजर में बहुत कुछ मुझे मिला था, रेयर आइटम्स मिला था। तो इस बार तो नहीं दिया, मुझे लगा इस बार भी देगी बट नहीं दिया। ओके जीन मेरे सामने। This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect वो होली लायर टूट गया। The church has always received special funding. वेंटी ने अटैक किया था। वेंटी ने नहीं, उसके साथी ने अटैक किया था। ये देख क्या हालत हुआ है यार, शॉट की तरह। हाँ अरे बेहोश मत हो, देख। Oh,
That's not my Barbados. fault. Even if I अरे atoned for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. कितना नौटंकी करती है रे तू? Oh, give it here. क्या करेगा तू? ओ वेंटी, तू क्या? What? ओके तो इसने रिस्टोर कर दिया यार, मतलब आई डोंट नो हाउ बट Huh? Let Paimon see. No, वाओ, no. I don't know how That you just- managed to fix it, but you'll never touch the दैट lion वाज जस्ट again. अमेजिंग। ओह इतना नखरा सही नहीं है, तू किसी को देने नहीं वाली I तो। really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf, Bard! Hey, don't go! ओके तो वेंटी ने अभी अभी बोला कि वो मैजिक हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, कुछ ही टाइम के लिए बस रहने वाला है, और वो भाग गया। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। लेट्स वॉच क्या होगा आगे। शायद हम लोग इस कैथेड्रल के बाहर जा रहे हैं और कुछ होने तो वाला है। क्या होगा? लेट्स वॉच। ओह व्हाट वाज दैट? तेरे पीछे पीछे। हाँ आई एम द हीरो। भाग गया। What's that? Wait a minute. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty isn't waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. अभी वेंटी स्टैचू ऑफ द सेवन के पास है, वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद या कुछ ऐसे ही टाइप का कुछ पेड़ है, तो वहाँ पर वेंटी गया है एज आई थिंक, मेरे हिसाब से। हाँ मेरे को मार्क तो ये पर आ रहा है कि वेंटी यहाँ पर है, नहीं सिंबल आ रहा है, एक सिंबल था, मार्क तो वेंटी हाँ वहीं पर होने का चांस है। चलते हैं, हाँ ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट हो गया है यहाँ पर। स्टैचू ऑफ द सेवन ब्लेसिंग्स।
चल पहले अपना पावर स्विच कर लेते हैं। पहले मेरे पास जियो पावर था और अभी मेरे पास एनिमो पावर है, मैं किसी को ठोक सकता हूँ। ये बहुत गंदा डायलॉग। चल बेंटी, क्या पावर अपने बढ़ा रही है? मैं भी हील करे The होगा wind उतना amongst the नुकसान branches is पहुंचने के good. बाद। I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allergenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still... I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yup. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. ओके तो अभी से मेरा एक न्यू जर्नी स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ का मिशन कंप्लीट कर लिया वेरी वेल। मेरा एडवेंचर रैंक भी बढ़ गया, ऑलमोस्ट हाफ तो हो ही गया, 19.5। ओके तो अभी मेरा नेक्स्ट मिशन, लेट्स गो टुवर्ड्स द मिशन। मॉन्स्टैड में टेलीपोर्ट वे पॉइंट एंड टेलीपोर्ट। तो वेंटी के हिसाब से जो अभी वेंटी से लड़ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी स्टैचू ऑफ द 7 में से एक है। ऑलमोस्ट गॉड लाइक पावर से, गॉड लाइक पावर क्या, वो भी गॉड ही है, उसे गॉड का अथॉरिटी दिया गया है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। अभी चलते अपने मिशन की तरफ। इधर तो लोकेट नहीं कर रहा, बट घूम घूम के जाते हैं। सिटी का थोड़ा टूर हो जाएगा।
ये कौन है रे? तेरे पर एरो का मार्क आ रहा है ना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट ओके। तो कुछ अनलॉक था जो अभी नहीं लॉक था जो अभी खुल गया। सॉरी अगर मैंने गलती से थोड़ा इधर इधर बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा। इसके अंदर चलते हैं। एंटर तेवान। दारू कड्डा बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये तेवान वेवान मेरे से ना होने वाला। दारू कड्डा बस। आ चुके हैं हम दारू कड्डे में। इससे बात करते हैं। So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Darknight hero. ओए पाइमन, ये इसने हीरो का बात किया। तू इतना चौंकने का बात नहीं था। हाँ इसने हीरो का बात किया। You weren't वो even पहले से डरी listening. हुई। तो Anyway, जाहिर से वो डरना चाहिए उसे। the Darknight hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, जैसे कि मार्वल या फिर I डीसी don't मूवीज have में much होता है कि interest in such कोई rumors. हीरो रात के अंधेरे में आता है और दुश्मन Unless, से of लड़ता course, he can है। help जस्ट take लाइक care दैट of the इसमें more एक डार्क नाइट belligerent हीरो है। patrons after they've वो had भी a उसी few का too काम करता many. है और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी इसके I would अनुसार। happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why हाँ he तेरे only बात का appears मतलब at इसीलिए night. इसीलिए वो रात में आता है Nevertheless, ताकि उसे the कोई अच्छे sightings से देख ना पाए confirm और that the उसकी पहचान Darknight को छुपाए hero रखता है। जैसे is कि more than just a groundless स्पाइडरमैन rumor. अपना पहचान को छुपाता ताकि उसके Anyway, घर वालों या फिर that's किसी को more or तकलीफ less ना आए। everything I know. डार्क You want नाइट to भी know सेम है more? वैसे ही। Ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. ओके तो ये डार्क नाइट हीरोज ऐसे लग रहा है मैं डीसी कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ या फिर ऐसे जस्ट लाइक दैट। अभी ये मिशन स्टार्ट हो गया है, न्यू मिशन। मुझे पता लगाने कि डार्क नाइट हीरो आखिर है कौन, क्या है इसकी सच्चाई, क्यों वो रात में आता है, इसलिए उसका नाम डार्क नाइट पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है। लोडिंग कंप्लीट। चलते हैं प्लाजा। प्लाजा में भी वही जगह ना जहाँ पर वो फाउंटेन है एक, जहाँ पर सारे लोग जमा रहते हैं बिना कुछ काम का। शायद कुछ काम नहीं होगा। हाँ तो यही है प्लाजा। अभी मुझे सबसे बात करना है और सबसे यानी कि पता करना है कि डार्क नाइट है कौन। किसी ने उसे देखा है? किसी ने नहीं। हाँ सबसे यही पूछना है कि डार्क नाइट यूरी नहीं तुमको नाम से ही लगता है कि तेरे को नहीं पता होगा। चल इससे पता होगा कि आना 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 एक आना क्या आना नहीं, इसे भी नहीं पता होगा। तो क्राफ्ट ने इसको पता होगा। मे बी फ्लावर शॉप वाली कुछ पता है तेरे को? इन्हें तो कुछ नहीं पता डार्क नाइट हीरोज के बारे में। इससे बात करके देखते अगर इसे कुछ पता होगा तो। You want to find out about the Dark Knight hero? हाँ मैं उसी के बारे में जानने के लिए तेरे पास आया हूँ। Further. What It's what me. wait a second, I तू डार्क am नाइट the हीरो है? Dark Knight तू hero. तो हीरोइन हो गई। You're पॉसिबल नहीं है right, डार्क नाइट I'm हीरो। not. जोक I was यार इतना joking. गंदा मजाक मत कर, तो अभी मारी जाती मेरे हाथों। याद रख ले। Jokes aside, बच गई I आज पूरे do तेरा दिन think अच्छा that है। the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time.
They must know something. ओके, तो उन पहरेदारों को जो रात में भी अपना काम लगन से करते हैं, उन्हें कुछ पता होगा इसके अनुसार। हाँ, वैसे ईमानदारी से काम करने सब कुछ पता चलता ही है। कुछ सीख लेना चाहिए इनसे कि ईमानदारी से काम करो, पता कुछ ना कुछ तो होगा ही। इससे बात करके देखते। बोल, क्या पता तेरे को डार्क नाइट के बारे में? You want to know about Yes, him? I want to know about the In Dark Knight fact, hero. I'm one of the few who has seen him with my own 2 eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow! Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time he rescued her. तो चलते उस फ्लावर शॉप वाली के पास और उससे पूछते तुझे क्या पता डार्क नाइट हीरो के बारे में, तू कैसे जानती है उसे? तेरा क्या भाई या रिश्तेदार कुछ लगता है या फिर क्रश है? All I can think about is Let's talk to her. Diluc. बताओ बताओ बताओ, What's wrong with me? क्या गलत है तेरे Why साथ? can't I get him कुछ out किया of हुआ my क्या? mind? Hello? क्या We thought यही to होता ask you जब about the Dark Knight hero. कोई My चीज तेरे पास hero. नहीं रहता। Oh, sorry. Just hearing ये his भी name gets me lost in इसी thought. पर क्रश है। Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me, but ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. That I really do not know. Perhaps it was fate? You know, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. पाइमन का बोलना एकदम सही है क्योंकि वो डार्क नाइट हीरो एकदम रात में आता है। बट मुझे रात होने का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस गेम में अपन ही भगवान है। हम ही इस गेम का टाइम को कंट्रोल करते हैं। दिन या रात वो मुझसे पूछ कर होता है कि क्या मैं दिन हो या रात हो। रात कर देते सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रात कर दिए। काश ये पावर रियल में भी मेरे पास होता है। क्या मजा आता है।
the ओके, तो Dark Knight ऑलमोस्ट hero. रात हो चुका है। अभी मुझे देखना है कि क्या डार्क नाइट द हीरो जिसके बारे में ये सब तारीफ कर रहे हैं मुझे, हाँ मुझे नेविगेट मिल रहा है। नेविगेट, चल 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 उधर चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलता है मुझे तो। अरे स्टक मत हो, रुक मत जा, चल आगे बढ़, मेरा रास्ता अभी आगे है। As fast as you can. ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। अब किधर, ऊपर जाना है। चल 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 चल। इधर क्या है? कुछ तो है जो है बोरिंग, नहीं पढ़ना मुझे। यहाँ पर मुझे ढूंढने को बोल रहा कि सिटी में ही कुछ तो होगा। लुक अराउंड द सिटी, सिटी में कुछ तो मिलेगा। अगर कुछ मिला तो अच्छा, मुझे डार्क नाइट के बारे में कुछ तो क्लू मिलेगा। लेट्स वॉच, वेट अ सेकंड, मुझे नीचे नेविगेट कर रहा है, इधर कुछ होगा शायद। वेट अ सेकंड, मेरा गेम स्टक हो गया। ओके मैं आ गया नीचे। व्हाट इज हैपनिंग? दैट्स डीलू। ओह ऑसम फाइट, ऑसम फाइट, ऑसम फाइट। The Dark Knight hero is Master Diluc? After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it! Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain Pie... Pie? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance, considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. Their persistence is unusual. I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master Diluc? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? ये मुझे छोड़ के भाग गया। ये कुछ गद्दार या पागल टाइप के लोग आ गए मेरे सामने, इसे खत्म करते हैं बिना देरी के, क्योंकि अभी मेरे पास एनिमो पावर है। एनिमो पावर है। ठीक से बोला कर राकेश, ठीक से बोला कर। एक तो खत्म।
बस 2 और। चल 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 चल, खत्म होगा तू आधी अक्कल। ये और आगे कितना आएगा रे, कितना मार खाने की तेरे को मारना है यार? इतना है मैंने तो पास तक नहीं आ जाना मेरे पास, देख ले बस लेने वाला तू मेरे से। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मतलब अच्छा सा कामे हमें यहाँ अटैक था, खत्म हो गया सबके सब। हाँ पाइमन वही जो होता है ना, शो खत्म होने के बाद पुलिस आता है, वैसे यहाँ पर भी शो खत्म होने के बाद ये गार्ड आ रहा है। Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Darknight hero, in which case... ओए पागल पाइमन शांत रहे, तेरे को कौन बोलने वाला ये? The Darknight hero. You saw him? Oh, the Darknight hero is, him. You, the hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Darknight hero long before you ever arrived here. इसे शक तो हो रहा है हमारे ऊपर पाइमन, तेरे वजह से सब गलत हो गया। कौन तेरे को मुख खोलने बोला था? Why would you lie to me about that? हाँ सॉरी, मेरे गलती। Never mind. You don't seem like bad folks. हाँ मैं अच्छा लड़का हूँ, मुझे छोड़ दीजिए I ना। do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Darknight hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Darknight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. ओके तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को मिस्ट्री सॉल्व करने में मजा आया। देखने में मैंने जो मिस्ट्री सॉल्व किया, हु इज द डार्क नाइट हीरो, मैंने आखिरकार सॉल्व कर ही दिया। वो आखिर में डीलुक निकला। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखा तो बहुत 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 थैंक यू। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो कंटेंट लाते रहूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आरा आरा, सायोनारा, बाय बाय।